Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, my dear students? Today we will continue this chapter number 13, ways to multiply and divide, with part number 5. Before starting this chapter, one thing I want to tell you, still I have sent so many PDF files. Please copy in your CW book. If you didn't understand any concept or any PDF file, so you should contact me. So Insha'Allah ta'ala I will give you proper solution and proper guidance. So my dear students, are you ready? Yes. Here, if Suha's heart beat 72 times in 1 minute, how many times does it beat in 1 hour? सुहा का जो हार्ट बीट है वो 1 मिनट में 72 टाइम बीट होता है. ओके, सो 1 आवर में कितना वो बीट करता है उनका हार्ट, उसका सॉल्यूशन प्लीज लुक एट दिस साइड इन ए क्वेश्चन नंबर 1. ओके, so here I have written a question, same thing. So 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes. So in 1 minute how many times heart beating? So in a 1 minute the heart beats 72 times. Okay, so 72 multiplied by 60. So here look at this side. The 2 multiplied by 0 ja 0 to the 0. In the same way 0 multiplied by 7 is equal to also 0. Clear? So here we will put extra 0 because of this is the places of 10. 10 प्लस के ऊपर 6 है, उसके आगे 1 नंबर है, therefore we will put extra 0 here. Okay, so we will put extra 0 here, right? And I have shown in different color. मैंने अलग कलर से different कलर से मैंने आपको बताया है. Clear? 6 2 जा 12. Okay, carry out by 1 which I have written here beta. Okay, 7 6 जा, चलो मेरे साथ 6 का टेबल बोलो. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 42 plus 1. 42 plus 1, 42 plus 1 is equal to 43. Okay, so we will written here 43. Okay, dear students, look at this as आपको ये स्पेस दिखाई देती है. ओके, कुछ भी नंबर उसकी जगह पे ऊपर दिखता नहीं है. So we will write 0 0. ओके, विच यू कैन सी हियर. तो मैंने रेड कलर से 0 लिखा है. आई हैव रिटन विथ रेड कलर 0, राइट? ओके, अनदर 0 आई हैव रिटन विथ रेड कलर. क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ वी विल ऐड दिस टू नंबर. 0 plus 0 0, 0 plus 2 2, 0 plus 3 3, 0 plus 4 4. So answer is Suha's heartbeat 4320 times will beat in 1 hour. Okay, it beats how many times? 4320 times in 1 hour. Okay, the answer is 4320. Okay, now
find out how many times it beats in one day. एक दिन में वो कितना बीट करता है, तो 1 आवर में कितनी टाइम वो बीट करता है बेटा? It beats in 1 hour 4320. So how many hours in one day? So there are 24 hours in one day. So we will multiply by, look at this side, 4320 multiply by 24. क्लियर? 1 आवर में कितनी टाइम वो बीट करता है? 4320 1 आवर में। तो 1 डे में कितना आवर होता है बेटा? There are 24 hours. So we will multiply by these two. So you will get answer. So are you ready for the solution? Okay. So I will double click on the question number 2. So you know very well it beats in 1 hour is equal to 4320. Okay, 1 day is equal to how many hours? 24 hours. So 4320 multiplied by 24. Now look at this side. 4 multiplied by 0, 0 4 ja 0. If you will multiply by with 0, if you will multiply by any number with 0, so you will get answer 0 only. Now 4 2 ja 8, 4 3 ja 12. कैरी आउट बाय 1. बेटा मैंने जो कैरी आउट जो आती थी उसको मैंने रेड कलर से लिखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाता है कि हुजैफा सर ने ये कैरी ली है, कैरी आउट लिया है. सो आई हैव मेंशन ऑल द कैरीज विथ रेड कलर. क्लियर? नाउ 4 4 जा 16, 16 plus 1 17. So I have written here 17. Okay, now we will put extra 0 because of we will multiply by with 2. 2 के आगे 1 digit है, so we will put extra 1 0 here. Clear? So we have put extra 0 here. उसको भी मैंने अलग कलर से लिया है. Understood? Now 2 multiply by 0. 2 0 ja 0. 2 2 ja 4. 3 2 ja 6. 4 2 ja 8. Clear? 0 plus 0 0. 8 plus 0 8. 2 plus 4 6. 7 plus 6 8 9 10 11 12 13. ये टोटल कितना है बेटा? देयर आर टोटल 6 लाइन. तो 7 के बाद 8 9 10 11 12 and 13. Okay, so unit digit is 3 and carry out by 1. Okay, 8 के बाद 1 9 9 plus 1 10. 8 के बाद 9 and 10. So we will put 10 here. Understood? So the answer is it beats 1,03,680 times in one day. How many times it beats in one day? It beats 1,03,680 times in one day. Now we will write the answer here. Okay. Now count your own heartbeats to find out how many times your heart beats in 1 week. एक दिन में
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सोचता हूँ कि मेरा हार्ट बीट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, सो ऑब्वियसली मैं भी 72 ले लेता हूँ तो आराम से मैं ये कर पाऊँ। तो बताओ बच्चों, एक दिन में कितना आवर होता है? 24। सो यू विल गेट आंसर 1,03,680। नाउ 7 दिन में यानी एक 1 वीक में कितनी बार बीट करता है? सो व्हाट वी हैव टू डू, we will multiply by 1,03,680 multiplied by 7. Now ready for question number 3? Yes. So my heart beat 72 times in a minute. We know 1 week has 7 days. So the number of times my heart beat in 1 week is equal to 1,03,680। हमने ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 में निकाला है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। ओके, सो लुक एट दिस साइड। 0 7 जा 0, 8 7 जा, चलो 8 का टेबल बोलो मेरे साथ। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। ओके, तो 56 का यूनिट डिजिट 6 एंड कैरी आउट बाय 5। नाउ स्पीक द टेबल ऑफ 6 अगेन। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 42 प्लस 5, पहले 5 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5, 6 7 जा 42, 43 44 45 46 47। Clear? So we will put 7 here and carry out by 4. Okay, 7 3 ja 7, 1 ja 7, 7 2 ja 14, 7 3 ja 21। Okay, so 21 के बाद we have to add 4. So what we have to do, we will draw 4 line first। तो मैंने 4 लाइन ड्रॉ कर ली। 22 23 24 and 25। So here carry out by 2। 2 7 0 7 ja 0, 0 plus 2 2, 7 1 ja 7। Okay, so in a 1 week my heartbeat 7,25,760 times in 1 week। Okay, so right answer is this। Now the last question for this period, for this video is, a baby elephant drinks around 12 liters of milk every day. How much milk will it drink in 2 years? My dear students, I am asking you, in 1 year how many total number of days? एक साल में कितना दिन होता है? So right answer is 365। ओके, तो 2 साल का कितना दिन होगा? तो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल मल्टीप्लाई बाय 2। उसका जो बेटा आंसर आएगा हम क्या करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। ओके, so ready for the question number 4? Yes.
Look at this side. The number of liters of milk the baby elephant drink in a day is equal to 12 liter. एक दिन में वो 12 लीटर मिल्क ड्रिंक करता है, क्योंकि ये बहुत छोटा बच्चा है, बहुत छोटा एलिफेंट है. It is a baby elephant and it drink 12 liter milk in one day. So we know the number of days in a year is equal to 365. The number of days in 2 years is equal to 365 multiplied by 2. तो हमको दिन मिल जाएगा कि नहीं बेटा? यस. चलो बच्चों मेरे साथ बोलो 5 का टेबल. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. तो unit digit is 0. Carry out by 1. Now 6 1 ja 6, 6 2 ja 12. 12 plus 1 13. Unit digit is 3 and carry out by 1. चलो 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 6 plus 1 7. तो how many total days? Total 730 days. Now baby elephant drinks around 12 liter of milk every day. So what we have to do in this question? We will do multiply by 730 multiply by 12. Okay, so look at this side. 730 multiply by 12. So we will start from the unit digit. Okay, so 2 multiply by 0 is equal to 0. 2 multiply by 3 हम ये करेंगे. 2 multiply by 3, 2 3 जा 6. Okay, now 2 multiply by 7, तो 7 2 जा 14. Clear? We will put extra 0, क्योंकि अभी हम कहाँ पे आए हैं? 1 पे. उसके आगे क्या है? 1 digit है, तो we will put extra 0 here. Clear? Okay, तो I have written 0 in different color ताकि आपको समझ में आ जाए बेटा. 1 0 जा 0. Now this 1 and 3, तो 3 1 जा 3. 7 1 जा 7. Now 0 plus 0 0. 6 plus 0 6. 4 plus 3 7. 1 plus 7 8. The answer is baby elephant drinks 8,760 liter milk in 2 years. Okay, so we will write the answer here. 8,760 liter of milk which baby elephant drinks in 2 years. Clear? So my dear students, I have solved totally 4 questions in this video. In next video we will continue this chapter. Okay, again I am telling you, if you didn't understand any topic, if you didn't understand any concept in this chapter, so write your message or pass by message through phone number, through admin, so we will give you proper solution. I will make one extra video regarding your doubts. Okay, and I will upload it if you have any query especially for that. Okay, thank you. Have a nice day. Go ahead.